First question of this exercise you know how to do. Let's start with second question. Form all the 3-digit numbers using the following digits. नीचे दिए हुए 3 digits को यूज करके आपको जितने हो सके उतने 3 digits के नंबर बनाने हैं, जितने पॉसिबिलिटीज हैं वो देखिए. हमें 3 digit के नंबर बनाने हैं. इट मीन्स हमें ये 3 प्लेस वैल्यूज 1s, 10s, 100s ऑक्यूपाई करवानी है. राइट. हम क्या करेंगे, पहले हम 6 को फिक्स कर लेते हैं. 6 को 100 प्लेस पे फिक्स कर देते हैं. तो ये दो प्लेस वैल्यूज पे 1 7 आ सकता है. एक पॉसिबिलिटी और है, इफ वी फिक्स 6 तो इट कुड बी 7 and 1 ऑल्सो. अब नेक्स्ट हम पॉसिबिलिटी में यहाँ 7 को फिक्स कर देते हैं, तो यहाँ 1 and 6 भी आ सकता है, और एक पॉसिबिलिटी में यहाँ 6 and 1 भी आ सकता है. अब हमारा 6 भी फिक्स हो चुका है, 7 भी फिक्स हो चुका है. नाउ वी विल फिक्स 1 at 100 place. So this place value could be 6 and 7. Another possibility is 7 and 6. Right. So this way we can frame 6 numbers. Right. So similar way you have to frame others as well. Like in B part, let's fix 7. 7 is fixed, so it could be 1 4 and it could be 4 1. Right. If we fix 1, then it could be 7 4 and it could be 4 7. Right. If we fix 4, then it can be 7 1 or 1 7. Right. C part, 3 0 and 5. Remember, we cannot fix 0 at this place. Let me tell you the reason why. This is 1's place, this is 10's place, and this is 100's place. If I place 0 here, and it could be 3 and 5, so you can see it's only a 2-digit number. That means 35 only. But we have to make a 3-digit number, so we cannot fix 0 at this place. So this possibility vanishes in this case. It's not possible in this case. 0 can never occupy 100's place if we have to make a 3-digit नंबर. अगर हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो 100 प्लेस पे आपका 0 कभी नहीं आ सकता. तो 0 के यहाँ आने की पॉसिबिलिटी तो खत्म है. दो पॉसिबिलिटीज बची हैं. Either we can place 3 or 5. If it is 3 here, then it can be 0 5 or 5 0. If we fix 5 here, then it can be 0 3 or 3 0. So these 4 possibilities in this case only. Next is B part. It is 6 6 5. So in this case, again same digit is coming, so we're gonna use this only once. 6 6, then it can be 6 5. It doesn't mean that we're gonna fix the same 6. If we place 6 6 or this 6, the same thing, right? So I'm keeping this 6 6 fixed here, so it could be 5 6. Now I'm not supposed to write this 6 here. No, because that will be the same thing. This size 6 will come here, right? So it will be same thing. Both will be same. And we don't have to make the same numbers again and again. Right? Now let's fix 5. Then it can be 6 6. Right? If I write 5, then this 6 will come here and this 6 will. But the number is same again with this one. So this possibility is again not possible. तो ये फिर से पॉसिबल नहीं हो सकता. तो इस केस में हमारे सिर्फ और सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज ही हैं. These are the only 3 possible numbers, right? Now E part. It's very easy. 3 5 9, all the 3 digits are different. So first fix 3. फिर हम लिख सकते हैं 5 9. इस 3 को फिक्स ही रखिए. 9 5 भी लिख सकते हैं. फिर आप 5 को फिक्स कर लीजिए. तो दो कौन से बचे हैं, 3 and 9. तो 3 9 आ सकता है, यहाँ 9 3 आ सकता है. राइट. अब 9 बचा है, 9 को फिक्स कर लीजिए. कौन बच गया, 3 and 5. 3 and 5 or it could be 5 and 3. So these are the possible numbers. Okay. Now F part.
9, 8, 2. Let's fix 9 first, then it can be 8 and 2, and it can be 2 and 8 also. Now fix 8, then it is 2, 9, or 9 to be possible hai. If we fix 2, 9, 8, and 8, 9. So we have again 6 possibilities in case of different 3 digits. Okay.